Assalamu alaikum. Welcome to the course Psychology and Guidance in Education. My name is Qudsiya Fatma. Today we will discuss very important and interesting topic of psychology, that is motivation. The objectives of the lesson are by the time you have completed this topic, you should be able to define motivation and explain how learners' needs influence their motivation to learn, and discuss how students' beliefs and attributions can influence motivation. So let's see what is motivation. Motivation is usually defined as an internal state that directs and maintains behavior. Motivation is something that prompts, compels, and energizes an individual to act or behave in a particular manner at a particular time for attaining some specific goal or purpose. It means motivation is something that energizes, that compels a behavior. ये इंसान को कोई काम करने के लिए मजबूर करती है, उसको फोर्स करती है, उसके अंदर इतनी एनर्जी पैदा करती है कि वो किसी काम को करने के काबिल हो जाए और वो काम किसी खास वक्त में और किसी खास गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है. Psychologists studying motivation have focused on 5 basic questions. These are 5 questions. First question is, what choices do people make about their behavior? अगर लोगों के पास ऑप्शन हो तो वो कौन सा काम करना पसंद करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के पास अगर ऑप्शन है कि वो अपना होमवर्क करें या टेलीविजन देखें. Why do some students focus on their homework and others watch television? Second, how long does it take to get started? किसी भी काम को करने की कितनी मोटिवेशन है कि एक स्टूडेंट तो फौरन अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है घर आते ही, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है वो सारा दिन गुजार देता है कि मैं अभी अपना होमवर्क करता हूँ. तो कितना टाइम लगता है एक इंसान को या एक स्टूडेंट को कि वो कोई काम स्टार्ट करे. थर्ड, व्हाट इज द इंटेंसिटी और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द चोजन एक्टिविटी. एक स्टूडेंट जो काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटी उसने सेलेक्ट की है, वो उसका होमवर्क है या कोई भी काम जो उसने करना है, उसके अंदर वो कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, कितनी दिलचस्पी से और कितना इंटरेस्ट लेके कोई काम कर रहा है. नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज समवन टू परसिस्ट और टू गिव अप. इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट काम को कितना परसिस्टेंटली करता है. स्टूडेंट ने होमवर्क स्टार्ट किया या कोई असाइनमेंट स्टार्ट की या कोई भी अपनी बुक खोली पढ़ने के लिए और 1-2 पेजेस पढ़ने के बाद उसने रख दी. और दूसरा स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने अब जो भी काम शुरू किया उसको मुकम्मल किया. अगर होमवर्क शुरू किया तो उसको मुकम्मल किया. अगर उसने कोई अपना लेसन जो था, जो उसको मिला हुआ था, वो पढ़ा तो उसको मुकम्मल किया. यानी ये हमारे ऐसे बिहेवियर हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि हमने किसी काम को कितना शौक से और कितनी दिलचस्पी से करना है और कितनी देर करना है और कब उसको छोड़ना है. लास्ट, व्हाट इज द पर्सन thinking and feeling while engaged in the activity. It means, is the student enjoying the task he or she is doing? क्या वो अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट फील कर रहा है कि वो किसी टास्क को शौक से और दिलचस्पी से कर सके, या वो सिर्फ वरी कर रहा है कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं, और क्या मेरे जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें मुझे इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा. There are 2 types of motivation: intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation. Motivation associated with activities that are their own reward. Intrinsic motivation is the natural human tendency to seek out and conquer challenges. When we are internally motivated, we do not need incentives or punishments or rewards because the activity itself is satisfying and rewarding. Intrinsic motivation ये internal motivation होती है जिसकी वजह से कोई student, कोई बच्चा या कोई individual किसी काम को अपनी satisfaction के लिए करता है. अगर student internally motivated है पढ़ाई के लिए तो उसको
کسی آؤٹ سائڈ فیکٹرز کی، کسی ریوارڈ کی اور کسی پریز کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کو خود سیٹسفائی کرے گا. So we can say that intrinsic motivation is associated with positive outcomes. اس میں اسٹوڈینٹس چیلنجز کو بھی فیس کرتے ہیں، ان کے اندر کیوریوسٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، ان کے اندر کوپریشن بھی پیدا ہوتا ہے. Second type is extrinsic motivation. Motivation created by external factors such as rewards and punishments. So when we do something in order to earn good grade, avoid punishment, please the teacher, or for some other reason that has very little to do with the task itself, we experience extrinsic motivation, جس میں ہم اس کام کو یا اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے ریئلی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کو کسی اور وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ وجوہات کون سی ہیں؟ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتائیں کہ اچھے گریڈز لینے کے لیے، یا اس کے لیے کہ ٹیچر جو ہے وہ ہماری تعریف کرے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ایک آؤٹ سائڈ ریوارڈ ہمارے لیے ہو، تو ہمیں اس کام کے اندر یا اس ٹاسک کے اندر کم دلچسپی ہوگی، جبکہ وہ جو ایکسٹرنل جو ایک فیکٹر ہے موٹیویشن کا، اس کی وجہ سے ہم کسی کام کو کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ انٹرنسک موٹیویشن اور ایکسٹرنسک موٹیویشن میں کیا ڈفرنس ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کی ریزن جو ہے اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری موٹیویشن، تو اس کو ہم لوکس آف کازیلٹی بھی کہتے ہیں. اٹ مینز لوکس آف دی کاز، کہ کسی بھی کام کرنے کا جو کاز ہے اس کی لوکیشن کیا ہے. Is this internal or external, inside or outside the person? So, what exactly is responsible for the motivation of an individual? کہ اصل میں جو موٹیویشن ہے کسی بھی انڈیویجول کے لیے کسی کام کو کرنے کی، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ What are the activity forcing that push and pull an individual? Psychologists have tried to provide the answer by identifying these activities, forces as needs, drives, and motives. So, we will discuss what are needs. Needs are general wants or desires. Needs start from basic level needs to higher level needs. When one basic level need is achieved, person is able to enter to next level. Self-actualization is the ultimate psychological need according to Maslow. میسلو نے انسانی ضروریات کی ایک ہائرارکی بتائی، جس میں انہوں نے لوور آرڈر سے لے کر ہائر آرڈر تک کی کیٹیگرائزیشن بیان کی. انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے میکسیمم پوٹینشیل کو اچیو کرنے کا راستہ بتایا. انسان جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اور اپنی نیڈس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح انسان کا پوٹینشیل بڑھتا جاتا ہے اور انسان اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح ہم انسان کے موٹیویشن لیول کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. It brings sequence and categorization. جیسے جیسے ہمیں ان نیڈس کا علم ہوتا جاتا ہے کہ ہم نیکسٹ لیول تک پہنچنے کے قابل ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم انڈیپینڈنٹ چوائسز کے قابل ہو جاتے ہیں. According to Maslow's theory, there are hidden potentials in human being and men use it according to the need. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کی بیسک نیڈس پوری ہوتی ہیں تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے میکسیمم پوٹینشیل کو یوز کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکے. کلاس روم application of Maslow's theory in classroom. Administrators and teachers must consider students' needs and their hierarchical order. The most important educational goal for student is to learn. Another important goal is to make this newly gained knowledge and information purposeful and meaningful to the students so that it may be retained and useful. An essential factor involved in meeting these goals is motivation.
If students are unmotivated in one way or the other, it is likely that little learning will take place. Or if by chance some learning should take place, it is a chance that it will not be retained. जैसा कि हमने हायरार्की ऑफ नीड्स में देखा, फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर है. उसके बाद सेफ्टी नीड्स हैं बच्चे की, किसी भी इंडिविजुअल की, और उसके बाद है सोशल एफिलिएशन. तो क्लासरूम में टीचर ने देखना है कि ये लेवल जो नीड्स का है वो उसको किस हद तक एड्रेस कर रहा है. क्या बच्चे को इन तमाम जो नीड्स हैं उसकी फुलफिलमेंट हो रही है या नहीं हो रही. इसी तरह जो फोर्थ लेवल पे सेल्फ एस्टीम नीड्स आती हैं, उसमें भी टीचर का काम है कि वो बच्चे को एक उसके अंदर एक सेंस पैदा करे कि उसको अहमियत दी जा रही है. मेकिंग स्टूडेंट्स फील दैट दे आर मेकिंग ए कंट्रीब्यूशन एंड दे आर वैल्यूड एज इंडिविजुअल. उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जिसमें क्लासरूम में टीचर ने बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो अपना जो था नॉलेज उसको उसने अप्लाई किया. तो इसी तरह जब एक स्टूडेंट के पास नॉलेज ज़्यादा होता है तो वो अपने क्लासमेट्स की भी हेल्प कर सकता है अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए. सेल्फ डिटर्मिनेशन, नीड फॉर कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटिवनेस. We all need to feel competent and capable in our interactions in the world. ये किसी इंसान की फ्री चॉइस है कि वो अपनी मर्जी से कौन सी चॉइसेस को लेता है विदाउट एक्सटर्नल कंपल्शन. Need for autonomy is central to self-determination because it is the desire to have our own wishes without external pressures. Self-determination in classroom. Classroom environments that support students' self-determination and autonomy are associated with greater student interest and curiosity. अगर स्टूडेंट के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो उसके अंदर फिर एक कॉम्पिटेंस भी पैदा होगी. इसी तरह क्रिएटिविटी, कंसेप्चुअल लर्निंग, एंगेजमेंट, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग स्ट्रेटजीज और साइकोलॉजिकल वेलबींग भी उसके अंदर पैदा होगी. A need give rise to a drive. Drives of any nature are divided into two categories: biological or primary drive and socio-psychological or secondary drive. So biological drives are all our bodily or organic needs fall into this category. Their purpose is to keep us alive and out of danger. Some examples of biological drives include hunger, thirst, sleep, temperature, pain. इसी तरह सोशो साइकोलॉजिकल या सेकेंडरी ड्राइव में सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन, द नीड टू अचीव, कंपनी, सोशल अप्रूवल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शामिल है. हमारी बहुत सी ऐसी ड्राइव्स भी होती हैं जिनके पीछे इंसेंटिव जो है वो एक रीइंफोर्सिंग एजेंट होता है. हम कोई ना कोई काम किसी ना किसी इंसेंटिव की वजह से भी कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज मोटिव. ए रीजन फॉर डूइंग समथिंग, something that causes a person to act. कोई भी नीड या डिजायर एक या एक से ज्यादा मोटिव्स का बायस बन सकती है. तो हम कह सकते हैं कि मोटिव एक ऐसी फोर्स या टेंडेंसी है जो इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है और उसको कंपेल करती है कि वो कोई किसी काम को करे. There are variety of motives. Some of these are hunger motive, thirst motive, sex motive, maternal motive, aggression motive, affiliation motive, etc. और स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोटिव अचीवमेंट मोटिव भी है, द नीड टू अचीव. और एज अ स्टूडेंट ये वाला मोटिव जो कि अचीवमेंट मोटिव है ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि उसकी बेसिक और नेचुरल नीड्स इम्पॉर्टेंट है. At the end there are assessment questions. You are supposed to answer these questions. Define motivation, how learners' needs influence their motivation. How would you identify the roles of interest, curiosity, emotions and anxiety in motivation? Explain how teachers can influence and encourage students' motivation to learn. And at the end, can teachers fulfill learners' needs of self-actualization in classroom?
For any questions, you can